अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम मुज़फ़्फ़र रसूल। आज की हमारी वीडियो फ्रीलांसिंग पे है। मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रीलांसिंग क्या है, आप लोग फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। लोग फ्रीलांसिंग से बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोग फ्रीलांसिंग से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट टॉपिक के बारे में गाइड करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 प्रोडक्टिविटी हैक्स टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी इन 2023। नंबर 1 इज प्लान योर डे अहेड ऑफ टाइम। The first step to being productive is to plan the day's schedule in advance. You must know what you are doing, when you are doing it, and how long it will take you on any given day. Without schedule, you are likely to miss important tasks. Way to detailed plan for the day. Early in the morning or the night before, write down everything you need to do so you have a sense of direction and know what to focus on time or next. This eliminates all the guesswork, reducing the chance of getting carried away and wasting time because you don't know what you are going to do next. Number 2 is write down the 3 most important daily tasks. Write down the 3 most important tasks of your day. Explain functions in detail to avoid confusions. Focus on important tasks instead of urgent ones. Number 3 is set a single goal for each day. Set a goal for each workday so you can focus on individual tasks. A good idea is to break down daily goals into multiple tasks, where you only tackle that specific task in the time allotted for it. Number 4 is set set specific times to check email. It it may be hard for some people to say no, but if you want to increase your productivity, you can let other dictate to you from time to time. Number 5 is use templates for regular tasks. Create a template for routine tasks that are done the same way every time. It also costs more time and less to produce products. तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो का कंप्लीट टॉपिक जो आप लोगों से शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी और अमेजिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।